Students, I welcome you to the PYQ live session at Swami Vivekanand Institute, and today we'll be talking about digital news in continuation to what I was talking in Unit 3 about reporting and editing. Because digital news has a new kind of information and also how it is being constructed and how used. This is a very current and latest topic in terms of mass communication and otherwise also. You all are getting connected to digital news in your daily lives through your all digital gadgets. So the importance of the topic is all the more. You have to understand कि if we are using digital news, how it could be important in terms of utilization and the results which are coming out of it. So ये समझने के लिए आई एम हेयर डॉक्टर भावना मदान एंड इसके हम डीप में जाके चीज़ों को देखेंगे कि डिजिटल न्यूज़ के आने से क्या फ़ायदे हुए हैं, क्या नुकसान हुए हैं, एंड उससे रिलेटेड PYQ इज़ ऑलवेज अवेलेबल टू यू बिकॉज दैट इज़ हाउ यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट योर MCQs फॉर द कमिंग UGC NET एग्ज़ाम. तो UGC NET की प्रिपरेशन के लिए हम पहले टॉपिक को अच्छे से जान लेंगे ताकि PYQ को समझने में हमें दिक्कत ना हो. और PYQ की सीरीज़ जो है वो दैट विल इंक्लूड ऑल द क्वेश्चंस विच ऑफ द टॉपिक्स विच आई हैव बीन डिस्कसिंग इन द पास्ट few lectures which I have discussed in Unit 1, Unit 2 and now coming to the Unit 3. तो वो सारे टॉपिक कहीं ना कहीं मेरे PYQ में रिफ्लेक्ट होंगे जब तक कि हम लास्ट टॉपिक तक पहुंच जाएं. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुली टेकिंग कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, उसमें हमने कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है. वो सारी चीज़ें मिलजुल के आपको UGC NET की प्रिपरेशन के लिए रेडी करेगी. तो इसीलिए आज मैंने ये टॉपिक लिया है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये Unit 3 में आपके मास कम्युनिकेशन के सिलेबस में है. और यही टॉपिक जो डिजिटल मीडिया का है आप ICT में भी देखेंगे. वंस आई मूव ऑन फॉरवर्ड एक टॉपिक है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. तो यही जो डिजिटल न्यूज़ है उसके लिए किस तरीके के आप इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं, हाउ यू आर डिज़ाइनिंग वुड बी द पार्ट ऑफ ICT. तो कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ही रेलिवेंस के हैं और वो बार बार सिलेबस में किसी ना किसी तरीके से रिफ्लेक्ट होते हैं. तो ऑटोमेटिकली उनके क्वेश्चंस इंक्रीज हो जाते हैं. ये चीज़ें समझने वाली हैं कि किस टॉपिक को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें क्योंकि उससे रिलेटेड फैक्ट्स जर्नलिज्म में ज़्यादा प्रिवेल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट सिचुएशन. social media is more important as compared to any other media we are using. So you can see here digital news making is the topic and this topic will identify how we are designing the digital news. And let's see, let's get started. What is the digital news making? न्यूज़ मेकिंग की जब हम बात करते हैं, न्यूज़ मेकिंग कैसे कंस्ट्रक्ट होती है, वही चीज़ें मैंने आपको प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक के लिए भी बताई थी. लेकिन डिजिटल न्यूज़ मेकिंग के लिए इट इज़ समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ ट्रांसफॉर्मिंग फंडामेंटली the nature of journalism and its ethics. The means to publish the news hands of the citizens while the internet encourages new forms of journalism which are interactive and immediate. तो डिजिटलाइजेशन के आने के कारण इंटरेक्टिविटी बढ़ी है. क्या बढ़ा है? आपका कम्युनिकेशन इंक्रीज हुआ है एंड इमीडिएसी बढ़ी है जो कि पहले आप नहीं देखते थे. यू वर नॉट एबल टू सी व्हेन यू वर डूइंग print media and electronic media. This is a wide change. And our media is a chaotic landscape evolving furious pace of professional journalism, journalistic sphere with tweets, bloggers, citizen journalists and social media users. तो कहीं ना कहीं आज अगर आपको न्यूज़ लेनी है तो न्यूज़ सोर्स कहाँ से आ जाता है? एक ट्वीट से, ट्विटर से. मीन्स आपकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो किसी
सेलिब्रिटी ने शेयर की तो वो उसी का आप यूज़ कर रहे हैं, उसी को कोट कर रहे हैं कि ये कहा गया। तो इस तरीके की चीज़ें पहले नहीं थी जर्नलिज्म में, बिकॉज नाउ एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कंस्ट्रक्टिंग द न्यूज़ could be in the hands of the user. You need not go to the print media or electronic media to create the content. So that is a big difference, like sitting and creating news at your home or with using your mobile phone or laptop. तो उसके लिए you should be knowing what are the things required for making digital news valuable. तो वही आज पूरा हमने समझना है उसको डिटेल में जाके कि there is a revolution with new possibilities, practices which are now threatened. Old practices क्या हो रही हैं, वो थ्रेटेंड हो रही हैं, क्योंकि उसको कोई नहीं यूज़ करना चाहता। हर कोई डिजिटल मीडिया को यूज़ करना चाहता है, हर कोई न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहता है। तो वो टेक्नोलॉजी बड़ी समझनी ज़रूरी है, आप उसका यूज़ कैसे कर रहे हैं वो समझना ज़रूरी है। सो टुडे द इकोनॉमिक्स ऑफ प्रोफेशनल जर्नलिज्म स्ट्रगल्स, audiences migrate online, shrinkage of the newsrooms are there, and future of the journalism is experimenting the journalism and also giving birth to investigative journalism. अभी आपको ज़रूरत नहीं है न्यूज़ मीडिया के लिए न्यूज़ रूम में जाने की, आपको ज़रूरत नहीं है उस तरीके के कंस्ट्रक्ट की जो पहले एक ओल्ड मीडिया ट्रेडिशनल मीडिया में था। क्यों? क्योंकि अब आपके पास स्पेस है, आपके पास खुद ही क्रिएट करने के लिए प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप न्यूज़ बना के न्यूज़ को पोस्ट कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट सोशल मीडिया हैज़ गिवन एंड दिस इज़ व्हाट डिजिटलाइजेशन, डिजिटल कंटेंट हैज़ गिवन, विच वॉज नॉट अर्लियर पॉसिबल। आप 2 मिनट का वीडियो बनाइए और उसको एडिट करके आप खुद ही उसको पोस्ट कर दीजिए लाइव, तो क्या होगा, न्यूज़ बन जाएगी। You can become मोबाइल रिपोर्टर, you can मोबाइल जर्नलिज्म की बात आ जाती है यहाँ पर। तो इस तरीके के टर्म्स, ये टर्म्स आपने पहले नहीं सुने थे, लेकिन अब ये बढ़ते जा रहे हैं, इनका यूजेज जो है वो आने वाले समय में और भी बढ़े। द फ्यूचर ऑफ डिजिटल मीडिया journalism is very bright. Now we are moving towards the mixed news media, a new media citizen and professional journalism across many media platforms. This mixed news media requires a mixed media ethics guidelines that apply to amateur professional. That is, there's a blog, there's a tweet, broadcast, newspapers, and there's a need to be reinvent the media of today, not of yesterday. Means जो कल था उसको छोड़ते हुए आगे बढ़िए, और what is today? Today digital media prevails, digitalization prevails. So digital news making is the future. You cannot deny that. अगर आपको उसके प्लेटफॉर्म्स और कहाँ पर यूसेज ज़्यादा है नहीं समझ आ रहा, then it is not reflecting correctly. So कहीं ना कहीं उन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है. That is why we are going to discuss this term, digital news platforms. Platforms means the space which is available to you for creating your own content, the content which is useful. So news portals have become a daily source of information for people who have no time to read the newspaper. आप जाते हैं, आप न्यूज़ पोर्टल को लॉग इन करते हैं and you can use that. So that becomes important, that the utilization of that media is done and it is done with the purpose. And numerous news websites are working to provide you news on your devices. With introduction of news portal, we don't need to wait for another day to get the coverage of important information. आपको न्यूज़पेपर की वेट नहीं करनी कि अगले दिन सुबह न्यूज़पेपर आएगा और आपको पता चलेगा. व्हाट हैपेंस ऑनलाइन मीडिया के थ्रू, न्यूज़ पोर्टल्स के थ्रू, what you do, you just get the information, you get the details about what is happening and what is latest. So that is the change, and we get a lot of important news throughout the day through these
200 news portal in India. There's almost 200 news portals in India right now. It would increase in the coming days, and we see that these news portals are giving you a lot of information, and they are giving lot of things which common man requires in terms of information. तो ये चीज़ें आ गई हैं. और जब मैं डिजिटल पोर्टल्स की बात करती हूँ, तो just to name a few, you can see I'm reflecting some of the names. तो इससे related आपसे पूछा जा सकता है कि important news portals क्या हैं, what kind of information news portals give you, how these what is the technology behind the news portals. तो questions किसी भी एंगल से आ सकते हैं. You should be ready कि हमारा MCQ जो, तो you should have a knowledge about new media. You should know the importance of new media and how it is reflecting. Like अगर मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करूँ, तो टाइम्स ऑफ इंडिया एज ए न्यूज़पेपर तो आप सबने ही पढ़ा है. And if you go to the portal of Times of India, you can see latest webcast मिल जाएंगे आपको, उस पे पॉडकास्ट मिल जाएंगे आपको जो कि रिलेटेड इश्यूज पे होंगे, विच आर टॉकिंग लाइव कवरेजेस होंगी वेबकास्ट में, या किसी तरीके से आपने किसी टॉपिक पे एक पॉडकास्ट बनाया जो कि विच इज़ वेरी रेलिवेंट, और उसको आपने प्रेजेंट कर दिया थ्रू the portal which is available to you. So this is this is what I'm saying. This is how there's a birth of mobile journalism, and there's birth of the digitalization of the content which was earlier not possible. So this is what we can see. NDTV पे जाके देखिए आप, there is a lot of content available to you in all sectors, starting from your entertainment to lifestyle to food, everything that would be reflected on the portal, and you can just log in and take advantage of the news stories which are being given to you. So आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, आपको देखना है कि न्यू मीडिया डिजिटलाइजेशन किस तरीके से प्रोलिफरेट हो रहा है, किस तरीके से उसकी यूटिलाइजेशन बढ़ रही है आए दिन, और अलग अलग एप्लीकेशंस के थ्रू यू कैन टेक advantage of this kind of media. Point is this. So here News 18 is there. बिजनेस स्टैंडर्ड का है जिसमें आपको सारे बिजनेस से रिलेटेड न्यूज़ कंटेंट मिलेगा. आउटलुक इंडिया है, टेंटराटन है, पावर स्पोर्ट्स टीवी है. तो ये जो अलग अलग पोर्टल्स हैं, आई थिंक दे आर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, दे आर गोइंग बियॉन्ड numbers, and right now 200 news portals are very they are getting spread out, and they are utilized by the common man. तो कहीं हम जब TRP की बात करते थे, अब क्या हो गया, the point your TRP has changed into the how many hits you are getting on the website, how many views you are getting. So वो उसका आपका, आप देखिए ना, आपके व्यूज होते हैं वेबसाइट्स पे, कमेंट्स होते हैं आपकी, लाइक्स होते हैं. सो इस तरीके की चीज़ों पे अब इम्पॉर्टेंस वी आर कंसंट्रेटिंग, बिकॉज more are the likes, more are the comments, more are the views. What happens, your channel is being watched, your website is giving more interaction to the audience. तो उस तरीके से अब हम measurement करने लगे हैं, because all these things are also important. The content which you are creating for digital media is going out to the audience, and audience is taking advantage. So this is the future. And now when I'm talking about the news portal, somewhere you have to understand कि उसके पीछे क्या कैलकुलेशन है, कितना यूटिलाइज. जैसे न्यूज़ आउटलेट्स आर ऑल्सो अडॉप्टिंग डिजिटल आउटरीच. आपकी कितनी आउटरीच है, आप कहाँ तक जा रहे हैं, एंड एंगेजमेंट मेथड्स. उसके लिए आपने ऐसा क्या किया है कि मोर एंड मोर viewers are watching your portals and taking content from your applications. तो उसके लिए you have to work as a digital content creator.
that you are, spreading yourself on those areas and, points where more viewers are available, and the viewers can take advantage of the content you're sharing with them. So the vast majority of these outlets offer newsletters. Okay, then you have official presence of Flipboard. Apple News is there, 87%, right? So about three-quarters of release podcast, and 37% allow comments on their articles. So कितने भी तरीके का जो कंटेंट आ रहा है वो अलग अलग फॉर्म्स में आ रहा है, like Apple News is there, then podcasts are there, then newsletters are there. So these outlets are also highly likely to use social media as part of their outreach. तो सोशल मीडिया ही बन गया है टोटल आउटरीच ऑफ न्यूज़. इट इज़ नॉट दैट इज़ ओनली फॉर द एंटरटेनमेंट. एंड किस तरीके से वो बन रहा है, किस तरीके से उसकी यूटिलाइजेशन हो रही है, दैट इज़ टू बी अंडरस्टूड. All outlets studied here have an official presence on the Facebook, while at least 9 in 10 have a presence on X, that is the Twitter. Formerly it was known as Twitter, so it is now known, Twitter is now in form of X. Instagram पे 97% है और YouTube पे 93%. So you can see this is the outreach of the platforms which I have mentioned: Facebook, Twitter, LinkedIn, X, and Instagram. TikTok has become an increasing popular way that these digital news sites reach their audiences. Nearly 9 in 10 of these sites have presence on TikTok, up from, now this was in 2020, now uske baad to TikTok ban ho gaya. And then talking about the Snapchat, which is having 25%. So some of the content of these, if it is not going more in favor of your own, digitalized content, then some countries like India has banned TikTok, other countries, some countries are not using Facebook. So it depends the kind of content you think is very ethically, standardized for your own country. Every country is not in support of each digital media platform. अगर कुछ आप content बना के डाल रहे हैं and it is, offensive, and it is giving the maybe the messages which can be harmful for your own country, then you will definitely stop using that platform. तो उसी तरीके से अगर देखा जाए तो digitalized platforms are becoming famous, their usage is becoming coming into the market, and डे बाय डे वी हैव टू अंडरस्टैंड कि उनकी यूटिलाइजेशन किस तरीके से की जाए. दैट इज हाउ वी डू सोशल मीडिया मार्केटिंग. यू ऑल नो दैट द मार्केटिंग ऑफ द सोशल मीडिया इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू आर अवेयर अबाउट, बिकॉज ये भी आपका एडवर्टाइजिंग का पार्ट है. This is what is going to come ahead in the syllabus of your advertising, because advertising is not only limited to print, electronic. Nowadays there is a digital part of your reflection on the channels, and also on the websites, and also the applications where you can use advertising for the purpose of making your content popular, making your products popular. So this is how we can see the digitalization is on the rise. Now let's see. The vast majority of adults in the United States get at least some news from digital devices, and the online space has become a host for digital homes of both legacy news outlets born on the web. Now, digital advertising revenue across all digital entities continues to grow, with technology companies playing a large role in the flow of both news and revenue. Explore the patterns and longitudinal data about digital news. So what we have to see, digitalization content, you can see how much is going on, what फेसबुक पे कितना जा रहा है, ट्विटर पे कितना जा रहा है, इंस्टा पे कितना जा रहा है. लाइकवाइज द कंटेंट इज गेटिंग डिवाइडेड
according to the revenue, according to the utilization it has. तो ये सारा कॉन्सेप्ट उसी से निकल के आया है कि डिजिटलाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बन गया है और वो आने वाले टाइम में इट्स अ कंसेप्ट ऑफ रिसर्च, इट्स अ कंसेप्ट ऑफ स्टडी कि हम किस तरीके से उसके बेस्ट यूसेज को मार्केट में लेके आएँ rather than depending on what was earlier available to us like print media. And what we were doing means newspaper mein advertising karna is not sufficient. There is another thing required to be present on social media, to be there on the other applications. So this is what, so already United States is ahead, and we are following the legacy coming from the West. Again वही डेवलपमेंट की बात आ जाती है. कहीं ना कहीं आप देखिए सारे ही टॉपिक्स रिलेट होते हैं. जब हम सोचते हैं कि अगर हम यूएस में देखें तो ये चीज़ें बहुत पहले हैं, हमसे आगे हैं वो लोग, हम उन चीज़ों को अब समझ रहे हैं और हम उस कॉन्सेप्ट को अब अपनाना चाहते हैं, या हमें लगता है कि अब वो ज़रूरी हो गया है, वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दैट. So that is the situation why digitalization is more important nowadays. And you have to understand why. Now see, अगर हम digitalization की बात करते हैं तो ethical news making भी आ जाता है वहाँ पर. Why? Because न्यूज़ मेकिंग इज़ अ एथिकल टास्क. अगर आपने डिजिटलाइज कंटेंट दे दिया कहीं पर और आपने उसके सोर्सेज को नहीं देखा, आपने ये नहीं चेक किया कि व्हाट वी आर क्रिएटिंग इज़ हार्मफुल और इट इज़ वेरी गुड, तो उसके लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर आर सर्टेन बेसिक रूल्स टू फॉलो. यू शुड नॉट fall into some wrong trap और आपने कुछ ऐसा कंटेंट दे दिया which was not very good. तो जर्नलिज्म इन द डिजिटल एरा इज इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स. अगर हम जर्नलिज्म की बात करते हैं और डिजिटल मीडिया की बात करते हैं तो देयर इज डेफिनेटली कॉम्प्लेक्सिटी. एंड विद यूनिवर्सल एक्सेस टू पॉडकास्ट, social media, email, blogs, video based application, virtually anyone can create and distribute the news online. तो ये चीज़ जो पहले नहीं थी पॉसिबल, अब पॉसिबल है कि मैं भी न्यूज़ क्रिएट कर सकती हूँ, आप भी न्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं. anyone can create news and distribute it online because digital concept is like that. You can create your own id on any of the application and you can spread the messages. नाउ पॉइंट इज दिस कि आप कितने एथिकल हैं उस मैसेज को क्रिएट करने में, आप सोशली कितने रेलिवेंट हैं, आर यू यूजिंग रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म और नॉट. तो इसके लिए मोर एवर ड्यू टू द स्पीड ऑफ द इंटरनेट, सोशल मीडिया न्यूज हैज बिकम more immediate and interactive. In that, people want to participate and interact with professionals on issues they are interested in. And while news is continuously being distributed 24 hours a day, 7 days a week, as a result, the perfect breeding ground for misinformation has emerged. And without adequate filters and journalism training, people share inaccurate information and misleading headlines. So this is also one of the drawback. Why? Because what happens, continuous information sharing है, कोई भी content बना रहा है, interactivity is coming, but when you are doing it, are you doing thinking कि हमने content कहाँ से लिया, are we sharing information which was relevant, or we have created something which will become a rumor. उसकी बात होगी और वो किसी और फॉर्म में आगे percolate होगा. इस तरीके का डिजिटलाइजेशन या न्यूज़ मेकिंग इज वेरी हार्मफुल. एंड यस, दिस इज व्हाट आई सेड ना कि इफ कंटेंट इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, आपने उसकी एथिकल ग्राउंड्स नहीं चेक किए, उसके फैक्ट्स नहीं चेक किए, जो कि आपको प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में the content is more ethical, because they are taking it from very correct sources, they are mentioning the sources and they are not spreading, they cannot do such activities by which
द कंटेंट बिकम्स हार्मफुल। तो यहाँ पर अगर हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, उसको डिजिटल फॉर्म में आगे लेके जा रहे हैं, हमारे पास उसको करने की सुविधा बढ़ गई है, तो हम उसका मिसयूज नहीं कर सकते। सो यू हैव टू चेक व्हाट you have to check the misuse of what is being created and percolated to the audience. So this is very important concept. Now accuracy की जब बात आती है, in terms of accuracy, fragmented information, rumors, which we call rumors, सुना है आपने, and distorted information are major challenge क्या है हमारे सामने, rumors का और जो गलत information है। journalists must navigate receive content through online media, and the speed at which journalists receive information, variety of sources provided it, require journalists to put more effort into the वेरिफिकेशन। आप अगर कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास आती है उसको ठीक से वेरीफाई करिए, अदरवाइज डोंट शेयर इट। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो विद मल्टी प्लेटफॉर्म रिपोर्टिंग। मल्टी प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं, जो कि पहले क्या था, दैट वाज ओनली अभी तो यू ऑल्सो नो द टेलीविजन इज ऑल्सो गॉन, like Netflix है तो you can watch, Zio Cinema है, all the channels have also shifted to the applications available on laptops and your mobile phones. Why? Because there is a complete shift to digitalization. They don't want to be seen on the television sets only. The thing is shifting to other available gadgets. And the journalism is actually rapidly dissemination of information, and user generated content is for the Society of Professional Journalists Code Ethics outlines the journalist duty to seek truth and report it. आपका काम है seek the truth and report it. But यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं. While seeking the truth, there are things which are very going in a wrong manner, and they could be, आपने एक टर्म सुना होगा जो कि मैं आपसे डिस्कस करूंगी, साइबर क्राइम मीन्स, जब हम आईसीटी की बात करेंगे, ये भी एक बहुत upcoming topic है in your mass communication syllabus, which is under the information ICT इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट में ये बात की गई है इसकी, बिकॉज आफ्टर 2010 onwards these kind of things are on the rise, and to check those things we need to filter the information. You cannot rely, or you cannot trust on the activities which are going on. So anyway, we will come to this topic also. I am just mentioning because today I am talking about digitalization, digital news. तो कहीं ना कहीं चीज़ें अगर गलत दिशा में जा रही हैं तो we have to stop that. So that is the task of a journalist who is reporting for digital media. Now जब मैं importance of digital news की बात करती हूँ, मैंने आपको न्यूज़ पोर्टल्स की बात की, उसी के साथ आप देखिए The following are digital journalism career paths. अभी आप देखिए, एक टाइम था कि हम सोचते थे कि डिजिटलाइजेशन करके क्या होगा. आज की डेट में तो there are a lot of job opportunities in front of you. You can work for the news portals, websites, development is there. There are YouTube channel on which you can create the content, and you can upload this content so that that could be utilized easily. Facebook pages is you can create the fastest way of circulating any recent news can be shared on a Facebook page, a lot of pictures, content, videos, so that people can easily take advantage of that. Then also social media, that is majority of the population depends on social media for news. Journalists even task for they are taking now in consideration this growing sector. And there is also something you must have heard about, the video journalism, that is editing, shaping them and uploading the content onto the websites
and it is known as video journalism. It is somewhere what I was telling you कि आप एक podcast बनाते हैं, आप एक webcast बनाते हैं, उसको share करते हैं, so that becomes the video journalism, and it is not like that what you were doing in the newsroom. तो यहाँ पर काफ़ी सारे ways हैं by which you get recognized. So you should know all this ना. This is how mass communication is coming in the future. इसके अलावा आप देखिए, आपके पास सब एडिटर, द वन हु चेक्स द कंटेंट इज द इम्पॉर्टेंट पर्सन. ऑनलाइन कंटेंट मैनेजर रहेगा जो रिस्पॉन्सिबल है मेकिंग फॉर द न्यूज़. एक रिपोर्टर है, पर्सन हु वर्बली अनाउंसेस द न्यूज़ and its information. A specialized journalist who supervises happening of news and the related content. तो इस तरह के रोल्स आ गए हैं फॉर डिजिटल कंटेंट. लाइक आई वाज टेलिंग यू कि न्यूज़ रूम में एंकर चाहिए, रिपोर्टर चाहिए, देयर इज अ कैमरा पर्सन. तो अगर आप न्यूज़ ऑनलाइन न्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं तो दीज वुड बी द पीपल हु कैन हेल्प यू इन क्रिएटिंग डिजिटल न्यूज़. तो आई थिंक आज मैंने जो आपको डिजिटल न्यूज़ मेकिंग की बात की है, आप को कहीं ना कहीं उसकी रेलिवेंस के बारे में पता चल गया है, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पता चल गया है. एंड नाउ आई थिंक अगर आपको डिजिटल न्यूज़ की बात करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि डिजिटल न्यूज़ इज समथिंग which is the future, and definitely you should know the importance, right? So let's now come to the PYQ. Now PYQ is of the टॉपिक्स विच आई एम बिन डिस्कसिंग फ्रॉम यूनिट 1 to 3. ये सारे PYQs अभी चलेंगे, और जो टॉपिक मैं करा रही हूँ वो प्रेजेंट है डिजिटल न्यूज़ मेकिंग. दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस विच आई एम टेकिंग अप टुडे. दैट इज क्लियर. So mass media legitimize the audiences. How does it legitimize the audiences? Means उसका लीगल रिलेशन फैमिली से है, पावर स्ट्रक्चर से है, पॉलिटिकल कनेक्शन से है, या प्रेस्टीज एंड स्टेटस से है. देखिए, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कि मास मीडिया एक्चुअली किस रिलेशन को बिल्डअप कर रहा है. इट इज एक्चुअली आंसर 4, जहाँ पर we are talking about prestige and status. Mass media is not concerned about your family background. They're not concerned about your power structure. What happens through mass media, you sell yourself in the market and you create your own prestige and status with your channel, with your, reporting work. So that is how mass media is more relevant, right? So how audience is getting attracted to it, that is question 1. Now question 2. King and Cushman have described grassroots participation, local knowledge and cultural beliefs as their choices is new myths, old myths, new fads, cultural fashion. तो ये क्वेश्चन आप देखिए, दिस इज विद द रेलिवेंस टू डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड लोकल मीडिया विच आई वाज टॉकिंग अबाउट. ये लोकल मीडिया से निकल के आया क्वेश्चन, और इसमें आप देखिए आंसर इज ओल्ड मिथ्स. मीन्स जो भी आपकी नॉलेज आ रही है ग्रास रूट लेवल पे, वो उनके खुद के बिलीव्स हैं, उनके मिथ्स हैं जो वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि दे आर वेरी रैशनल पीपल. सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एट द ग्रास रूट लेवल, एंड इट इज हाउ यू आर getting reflected. So let's come to question 3. The community radio concept is identified with, yes, this is again, narrow casting, not even broadcasting, not even personal casting, not even podcasting. It is going beyond to the, narrowing down to the level of local people and identifying the truth. Chaliye, moving forward. Yes, this question again goes back to your print media. The major recommendations of the McBride Commission, जहाँ पर हमने प्रेस कमीशंस की बात की थी, तो हाउ कुड वी फॉरगेट मैकब्राइड कमीशन. मैकब्राइड कमीशन में सेंट्रलाइजेशन ऑफ मीडिया ओनरशिप की बात हुई है, रिस्ट्रक्शन ऑन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात हुई है, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ मीडिया की बात हुई है, या हायर टैरिफ फॉर टेलीकम्युनिकेशन की बात हुई है. Actually, we have talked about McBride Commission, many voices, many words. ठीक है, many voices, one word आपने सुना होगा, is the report given by the McBride Commission. Yes, और उसमें हमने किसकी बात की है? डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ मीडिया की बात की है.
सो आंसर 3 इज करेक्ट। तो ये चीजें बेसिक हैं। अगर हम कोई बात कर रहे हैं बेटा, गो बैक, get into the details of the topic, even if you don't know the detail, questions attempt करो, टॉपिक्स को समझो। जितना ज़्यादा आप कॉन्सेप्ट को समझोगे, आपको समझ आएगा कि क्वेश्चंस कुड कम फ्रॉम एनी एंगल। एक एंगल नहीं है किसी भी टॉपिक का, इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं। एंड यू नो, अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस इज वन थिंग, आंसरिंग द MCQs इज अनदर थिंग। तो वही मैं आपको बात बता रही हूँ कि मैकब्राइड कमीशन में क्या हुआ था। ये ग्लोबलाइजेशन का भी क्वेश्चन हो सकता है। ये आपकी दिस टॉपिक इज ऑल्सो पार्ट ऑफ न्यू वर्ल्ड इंफॉर्मेशन ऑल्सो। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, डिटेल्स ऑफ ईच टॉपिक। नाउ क्वेश्चन 5। अब देखिए डिजिटल मीडिया की बात आ गई। यहाँ पर भी देखिए हम क्या बात करें क्वेश्चन 5 में, द कन्वर्जेंस प्रोसेस ऑफ डिजिटल मीडिया has led to the development of limited mass space, critical impersonal space, personal information space, non-personal economic space. So the question is direct, आंसर इज ऑल्सो सिंपल कि हम अगर कन्वर्जेंस प्रोसेस की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट पर्सनल इंफॉर्मेशन स्पेस। दैट इज द आइडिया, that is the right answer when we talk about convergence process, right? Now question 6, dash is known as the patron saint of the electronic colonialism. अब यहाँ पर भी देखिए point is this कि क्या है यहाँ पर, you have to check out, the answer is Thomas McFay. This is important, you should know the names. Now come to the ऑनलाइन मीडिया, अगेन दिस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कोई सिंपल ऐसे तो नहीं आएगा कि व्हाट इज ऑनलाइन मीडिया, यू ऑल्सो नो दैट। क्वेश्चन में कोई ना कुछ पूछा जाएगा जो रिलेटेड होगा ऑनलाइन मीडिया से। तो यहाँ पर देखिए आप, automation is critical to make online media convertible, personalized, traceable, impersonal. So basically हम ऑनलाइन मीडिया का यूसेज इसीलिए कर रहे हैं कि हमारा इंटरैक्टिविटी बढ़े, हमारा पर्सनलाइजेशन बढ़े, एंड दैट इज हाउ वी टर्म इट एज अ personalized media. That is the whole meaning to when we talk about automation. Question 7 done. Now coming to question 8. Now in Kheda Rural Television Project, the program production methods focused on, that is disinforming the villages, post-testing the needs, maximum interaction with villagers, avoiding villagers. तो यहाँ पर आप देखिए, when खेड़ा की, मैंने साइट की बात की थी और ये खेड़ा भी टेलीविजन से रिलेटेड है। इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं तो ये तो है नहीं कि आप सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में यू शुड बी नोइंग। सो इट इज़ ऑल्सो हिस्ट्री ऑफ व्हेन वी टॉक अबाउट प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक। देखिए आज मैं क्वेश्चंस आपको वेरिड डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन ये सब इम्पॉर्टेंट हैं। सारे क्वेश्चंस आप मान के चलिए कि अगर आपने ठीक से PYQ समझ लिए, आपने अगर ये क्वेश्चन समझ लिया तो क्वेश्चन इसको ट्विस्ट करके भी आ सकता है इन एनी फॉर्म। इट कैन कम इन द मैच द फॉलोइंग ऑल्सो। तो फॉर्मेट समझिए क्वेश्चन का, टॉपिक समझिए और किस तरीके से दे आर चेंजिंग the meaning of the concept from one question to another, because उसी चीज को अगर वो किसी और फॉर्म में पूछेंगे तो you should basically understand the meaning. That clarity has to be built up when you will be doing lot of PYQs, right? So खेड़ा रूरल टेलीविजन की बात है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आंसर 3 means maximum interactivity with the villagers was expected when we talked about Kheda rural television, and the production methods which were using, उसमें उन्होंने क्या किया था, participation of villagers को increase किया था. That is what they did. Now moving on to question 9. ये देखिए फिर से आ गया assertion and reasoning. यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है. Assertion है letters to the editor are spontaneous response to the newspaper contents, right? So ये एक direct question है आपका reporting and editing से related है, that is unit 3. इसमें these letters reflect public opinion and can also be an organized persuasive device. So reason ये दिया है कि basically
इट इज बीइंग यूज्ड, बट उसके पीछे रीजन क्या है जो हम लेटर्स टू द एडिटर यूज करते हैं? वी आर एक्चुअली यूजिंग इट एज अ persuasive device. Now both A and R are true. Yes, both A and R are true. Actually this is the right answer. आप आगे बढ़ेंगे ही नहीं, आपको ये नहीं सोचना यहाँ पर कुछ फॉल्स है ही नहीं, यू आर यूजिंग इट इज, ये ए भी यहाँ पर ट्रू है, बी आपका असर्शन भी ट्रू है, रीजनिंग भी ट्रू है, तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन, इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड. जहाँ पर फॉल्स हो जाता है या एक्सप्लेनेशन करेक्ट होती है वहाँ पर फिर भी यू हैव टू sometimes you go wrong, but this is a very direct question and easy one for you. Okay, now moving on to question 10. Now talking about what is question 10 reflecting with regard to a word processing software. The process of combining static information in a publication together with variable information in a data source to create one merged publication is called. जो merged publication होती है, what does it know? What it is known as electronic mail, data sourcing, mail merge, या फिर spam mail. You must have heard about all these terminologies. पर यहाँ पर जब हम merged publication की बात करते हैं तो we have this answer is correct, that is the mail merge. Clear? I think question 10 तक आप सबको clear हो गया है. Moving further, which of the following is a characteristic of Web 2.0 applications? जबकि we have moved ahead, Web 2.0 का question आया होगा 2012 में या उससे भी पहले, but still you have to be knowing that it is multiple users schedule their time to use Web 2 applications one by one. Web 2 applications are focused on the ability for people to collaborate and share information online. Web 2 applications provide users with content rather than facilitating users to create it. Web 2 applications use only static pages. तो यहाँ पर आपके पास इतने सारे choices हैं. तो यहाँ पर Web 2 applications are focused on ability for people to collaborate and share information online. So that is the idea how content is being created and then that content could be shared online. So that is one of the ability of Web 2.0, right? Let's see. Coming on to question 12. HTML stands for. So this is a very simple question. And there is only in front of you the full form of HTML. Now can you just think, give it just a moment and just think what could be the right answer. There are 4 full forms in front of you. So talking about question 12, HTML, hypertext markup language, hypertext manipulation language, hypertext managing links, hypertext manipulating links. यहाँ पर क्या आंसर सही है? So basically it is hypertext markup language. This is the right answer. Okay? So that is how we see HTML stands for. Now, simple. Every type of communication is affected by its reception, transmission, non-regulation, context. So, कोई भी communication है, उसके पीछे अगर आपकी relevance ठीक होनी चाहिए, reception, transmission और non-regulation is part. Actually, context क्या है? कैसे आपने उस message को बनाया, उसका how you have designed it that it is going to affect becomes the context. So, this is how question 13. आइए आगे बढ़ते हैं question 14 पे. Which of the following is an instant messaging application? आपके पास choices हैं WhatsApp, Google Talk, Viber. Now select the correct answer from the codes given. Means आपके पास 3 choices हैं ऊपर और means 3 messaging applications हैं और choices आपके पास 4 हैं A and B, B and C, A, B and C. Actually answer D is correct because तीनों की तीनों ही applications
आप यूज करते हैं फॉर इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन. So this is how you can, you have to know what all digital media applications are there and questions could come like this. So this is very relevant and simple question. Moving on to question 15. Now this question is basically for the television. What are the units the ethnomethodologists study in films and TV shows? Is it dialogues and lyrics, all sounds and music, the main conversations, the themes and something, sub-themes? तो यहाँ पर जो आपका correct answer है is actually dialogues and lyrics. So this is how we see, what is the correct answer for us. That is dialogues and lyrics. It is simple, not that tough. Let's see question 16. Why do mediated text and everyday conversation are assumed to be same? अब अगर हम mediated text की बात करते हैं या everyday conversation की बात करते हैं, तो why they are the same? Actually, there are explanations to it. You can just go through. There is no difference between the real life and television drama. First is this. Second, mass media and reality shown in TV emanate from the same society. See, the perception of the writer about the world and the real life is considered to be the same. And D is the perception of the people as assumed and shared by the writer and the reality are the same. तो एक्चुअली में जो लोग परसीव कर रहे हैं और जो राइटर रियलिटी लिख रहा है वो दोनों सेम है. तो आंसर डी इज द राइट आंसर. ठीक है, क्वेश्चन 16 क्लियर हो गया. Let's move on to question 17. This is again about your reporting and editing and how we put the sequence of the factors for navigable news reporting. अब यहाँ पर आपके पास 4 चीज़ें हैं. कम्युनिकेशन मोडालिटीज, नॉन लीनियर राइटिंग, कस्टमाइजेशन एंड ऑडियंस इन्वॉल्वमेंट की बात हो रही है. तो यहाँ पर आपके पास चारों चीज़ों को घुमा फिरा के 4 जगह दिखाया गया. तो यहाँ पर आपका आंसर 1 करेक्ट है, विच इज कम्युनिकेशन मोडालिटीज, नॉन लीनियर राइटिंग है. उसके बाद कस्टमाइजेशन होगा, उसके बाद लास्ट में आपका ऑडियंस इन्वॉल्वमेंट होगा. सो 1 इज making those modalities, second is writing, and then customization. So this is simple. Question 17, not so tough. Moving on to question 19. What is the news perspective of cognitive psychologists? अगर हम cognitive psychology की बात करें तो उसमें न्यूज़ पर्सपेक्टिव को कैसे देखा जाता है. एज आई टोल्ड यू कि न्यूज़ बनाने से पहले उसके पीछे एक पर्सपेक्टिव रहता है. आप अगर कुछ न्यूज़ देना चाहते हैं, एक स्ट्रक्चर भी है, एक पर्सपेक्टिव है. सो दिस इज हाउ यू हैव टू रिफ्लेक्ट. अ रीलुक एट द ऑडियंस, different study of media audience, detachment of media audience from media, rejection of media audience theory. तो आपके पास 4 choices हैं. Answer 2 is the correct, that is different study of media audience. Means हमारे पास अलग अलग studies हैं media audience की, and that is how we make the perspective of the news by studying the needs of the media audience, not by their detachment, not by their rejection, and not by the relook. Actually, by understanding the audience, you can create that interactivity, which is news perspective, which becomes the news perspective. Clear? Now, question 18. Media discourses are often described as power relations, entrapment, social fit, industry, text. ये थोड़ा फिर से आपका मीडिया का रिफ्लेक्शन है. मीडिया कैसे अपने आप को प्रोजेक्ट करता है. एक्चुअली what are the discourses are actually from the power relations. That is part 1. Now, the inverted pyramid, which I have discussed about yesterday in the class, and I've told you about how news structure is there. So inverted pyramid style in newspaper content is normally used for features, society news, editorials, hard news. So you don't have to confuse yourself. Neither features, neither society news, neither editorials. It is hard news. So how
When you take out the hard news, उसके 5 W's when H लेके उसकी एक लीड बना के उसकी बॉडी बना के आप उसको कंक्लूड करेंगे तो क्या होगा, इन्वर्टेड पिरामिड का यूटिलाइजेशन होगा और हार्ड न्यूज आएगी ऑडियंस के सामने. क्लियर? Question 20. Now again, it is related to the printing process. Intaglio plates are used in letterpress printing, screen printing, offset printing, gravure printing. तो आप देखिए यहाँ पर there is a question which could confuse you. ये अगर आप देखिए यहाँ पर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज हैं ये अलग अलग, किस तरीके से लेटर प्रेस किए जाते हैं, स्क्रीन प्रिंटिंग, ऑफसेट. सो ग्रेव्यूर प्रिंटिंग इज द राइट आंसर हियर. राइट? सो आपको ये देखना है कि अगर कोई क्वेश्चन आया है और उसको they have asked and you don't know, means sometimes the question could be, I have told you ना, unique in its style. तो हमने प्रिंटिंग की बात की है अभी, but we have not gone into the details of types of printing. तो कई बार types of printing में भी they are talking about the gravure printing which is the intaglio plates और कहीं नहीं आते हैं ना, ये different form के plates हैं जो कि ग्रेव्यूर. तो आप थोड़ा सा यहाँ पर अगर उसको कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे ये तो बहुत ही बेसिक है, ये डिफरेंट है एक्चुअली जहां पर आप इंटैग्लियो प्लेट्स की बात कर रहे हैं. क्लियर? आई थिंक दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल. Okay, let's take up one more question. The final edited version, this is question 21 for today's session. The final edited version of a television commercial prepared for client's approval is called as. अब ये देखिए टेलीविजन कमर्शियल की बात हो रही है और ये क्या है, आप एक फाइनल वर्जन दे रहे हैं तो उनको आप फाइनल प्रिंट दे रहे हैं, अप्रूव प्रिंट दे रहे हैं, फाइनल कट दे रहे हैं या आंसर प्रिंट दे रहे हैं. राइट? वेरी कॉमन क्वेश्चन. लेकिन आप कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पर कि मे बी वो फाइनल प्रिंट कहलाता होगा. नो, इट इज नोन एज द आंसर प्रिंट. जो उनको चाहिए था उसके लिए आपने जो क्रिएट करके दिया एंड नाउ दैट कैन बी यूटिलाइज्ड इज द आंसर प्रिंट टू व्हाट दे वर लुकिंग फॉर. क्लियर? ओके, गुड. क्वेश्चन 21 हो गया. And now I think we can stop, as already our session has been we have discussed a lot of things about digital media today. Even I've taken up the questions related to unit 3 and also given you insight into the previous questions which were related to globalization and also related to other topics of print production. तो अभी क्या चलेगा बेटा, ये सीरीज चलेगी. क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं. बात यह है कि आप उनको अटेम्प्ट करना सीखिए. ट्राई टू बिल्ड अप योर एटीट्यूड एंड योर मेंटल एबिलिटी टू टिक ऑन द राइट आंसर. एंड उसके लिए वी आर हेयर टू गिव यू द लाइव सीरीज. कैच यू अगेन टुमारो. हैव अ गुड डे.